Hi everyone and welcome to today's video. I am Rajshri Tiwari and I make case law explainers. This topic is related with banking law. So let us start. Today we are discussing a very important and recent Supreme Court judgment. Name of the case is State Bank of India versus Amit Iron Private Limited and others. It is decided on 7th April 2026 and this case is extremely relevant for banking law, administrative law and also gives us a fresh application of a doctrine, Audi Altrum Partem. Audi Altrum Partem translates to hear the other side, one of the most important principles of natural justice. तो पहले समझ लेते हैं ये होता क्या है। कोई भी जुडिशियल या एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी अगर किसी पर्सन के अगेंस्ट कोई डिसीजन देती है तो ये मैंडेटरी होता है कि जिस पर्सन के अगेंस्ट कोई डिसीजन पास हुआ है उसे एक अपॉर्चुनिटी दी जाए उसका साइड एक्सप्लेन करने की। So that is why this principle is very important and this has also been dealt in this case. Now let's quickly understand what we will cover in this video. First, the background कि बैंक्स अगर किसी भी अकाउंट को फ्रॉड कैटेगरी के क्लासिफिकेशन में क्यों डालती है। सेकंड, लीगल डिस्प्यूट व्हाट द हाई कोर्ट सेड एंड व्हाई द बैंक्स वर अनहैप्पी इनफ टू अपील टू द सुप्रीम कोर्ट। थर्ड, द प्रिसाइज इश्यूज दैट केम अप बिफोर द कोर्ट। फोर्थ, द एक्चुअल होल्डिंग व्हाट द सुप्रीम कोर्ट डिसाइडेड एंड फिफ्थ, व्हाई दिस केस मैटर्स। सो लेट्स बिगिन विद द बैकग्राउंड। So, why does fraud classification even exist? आरबीआई ने मास्टर डायरेक्शंस इशू किया था जो बैंक्स को अलाउ करता है कि आप डिटेक्ट कर सकते हो फ्रॉड एंड रिपोर्ट कर सकते हो फ्रॉडुलेंट अकाउंट्स को अर्ली स्टेज में, क्योंकि अगर ज्यादा टाइम पास हो जाएगा तो इट वुड बी अ लॉस टू द बैंक्स, टू द इकोनॉमी एंड लाइक इट वोंट बी वेरी इफेक्टिव फॉर अ पॉजिटिव इकोनॉमी। तो ये एक प्रिवेंटिव स्टेप है। अब कौन सी एक्टिविटीज को हम फ्रॉड कैटेगरी में डाल सकते हैं? एग्जाम्पल्स हैं मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स, मतलब इलीगल यूज ऑफ अनदर पर्सन्स मनी, या फिर चीटिंग, विलफुल फॉल्सिफिकेशन ऑफ रिकॉर्ड्स या फ्रॉडुलेंट फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस। तो इन इश्यूज को इन्वेस्टिगेट करने के लिए बैंक्स आर अलाउड टू एंगेज ऑडिटर्स इंक्लूडिंग फॉरेंसिक ऑडिटर्स जो एग्जामिन करेंगे सस्पेक्टेड फ्रॉड in an account. Now, here is why this matters so much. Once an account gets tagged as fraud, the consequences for the borrower are severe. They get debarred from institutional finance. That means no more loans anywhere from any bank. And on top of that, there can be far-reaching criminal consequences as well. So when the stakes are this high, the question of how fairly this classification process is conducted becomes critical. And that is exactly what this case is about. Now, to understand this case, we need a short timeline. 3 points are there on this timeline. 2016, RBI Master Direction of 2016 was issued, जो govern करता था fraud classification. But these directions did not provide any mechanism for the bank to issue a show cause notice or for the borrower to respond before being tagged as fraud. अब 2023 में इसी गैप के कारण लिटिगेशन हुआ, केसेस हुए और सुप्रीम कोर्ट ने इन राजेश अग्रवाल वर्सेस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टेप इन करा। कोर्ट रेड द प्रिंसिपल ऑफ ऑडी ऑल्ट्रम पार्टम इनटू दिस फ्रेमवर्क और कोर्ट ने बोला कि जो बोरोवर्स हैं दे मस्ट गेट एन अपॉर्चुनिटी टू रिस्पॉन्ड बिफोर क्लासिफिकेशन। नाउ 2024 में आरबीआई ने नोटिफाई करा न्यू मास्टर डायरेक्शंस और इस मास्टर डायरेक्शंस में उन्होंने एक मैकेनिज्म बिल्डिंग करा कि एक शो कॉज नोटिस भी होगा, फिर एक 21 डे विंडो होगा फॉर द बोरोवर टू रिप्लाई एंड अ रीजनड ऑर्डर एट द एंड। सो ऑन पेपर बाय 2024 द फ्रेमवर्क लुक्ड फेयर, but one big question was unanswered. Does opportunity to respond means just a written reply or will it mean an actual personal oral hearing? So that is the gap which this case seeks to fill. अब 2 पैरेलल केसेस आए कोर्ट के सामने। पहले केस में अमित आयन प्राइवेट लिमिटेड एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो एसबीआई ने अमित आयन प्राइवेट लिमिटेड का अकाउंट
क्लासिफाई करा एज फ्रॉड ऑन 13th March 2024। एसबीआई ने शो कॉज नोटिस इशू करा और फिर एक रीजन ऑर्डर पास कर दिया, लेकिन कोई ओरल हियरिंग नहीं हुई। अब अमित आयरन ने इसको कैलकाटा हाई कोर्ट के सामने चैलेंज करा। कैलकाटा हाई कोर्ट ने एसबीआई का ऑर्डर पॉश कर दिया और बोला कि एक पर्सनल हियरिंग रिक्वायर्ड थी। अब एक दूसरा कनेक्टेड केस है, बैंक ऑफ इंडिया ने क्लासिफाई करा अकाउंट ऑफ एमएस लिलीपुट किड्सवेयर लिमिटेड एज फ्रॉड। अगेन उन्होंने शो कॉज नोटिस दी, बोरोवर ने रिटर्न रिप्लाई दिया, लेकिन कोई ओरल हियरिंग नहीं। अब दिल्ली हाई कोर्ट ने सेम रीजनिंग फॉलो करी और पॉश कर दिया ऑर्डर। So now we have two high courts, Calcutta and Delhi. They are both interpreting the 2023 Rajesh Agrawal judgment as making a personal hearing mandatory. Now, the banks were not happy with this interpretation. So both State Bank of India and Bank of India, they appealed to the Supreme Court. अब देखते हैं issues before the Supreme Court क्या था. Issue 1. Does the Rajesh Agrawal judgment actually recognize an inherent right to a personal or oral hearing before fraud classification? Issue 2. Is the mechanism in the 2024 Master Directions, show cause notice, written reply, reasoned order, enough on its own to satisfy natural justice, or is something more required? Issue 3. Are banks legally obligated to hand over the forensic audit report to the borrower before classifying the account as fraud? Now, what are the arguments from both sides? Because this will help us understand why the court reasoned the way it did. So, banks और आरबीआई ने आर्ग्यू करा कि जो फ्रेज है अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग, इसका ये मतलब नहीं है कि आपको ऑटोमेटिकली पर्सनल और ओरल हियरिंग मिलेगी. They said requiring an oral hearing in every single case would be impractical and it will be misused to cause delay. अगर प्रैक्टिकली हम देखें, सपोज एक कंपनी है जिसके 5 डायरेक्टर्स हैं और ईच वन डिमांड कर रहा है पर्सनल हियरिंग एज अ मैटर ऑफ राइट, तो जो होल प्रोसेस है इट कुड बी डिलेड फॉर मंथ्स एंड ड्यूरिंग दैट डिले बोरोवर्स कुड पोटेंशियली डिसिपेट एसेट्स और डिस्ट्रॉय एविडेंस. ऑन द अदर साइड, बोरोवर्स ने आर्ग्यू करा कि राजेश अग्रवाल स्पेसिफिकली इंटरप्रेट कर रहे हैं ऑडी ऑल्ट्रम पार्टम एज इंक्लूडिंग एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लेन द एविडेंस अगेंस्ट इट. अब वो बोल रहे हैं कि अगर हमें एक्चुअल ओरल हियरिंग नहीं मिलेगी तो जो एलिगेशंस है वो दैट विल बी इफेक्टिवली प्रिज्यूम्ड टू बी करेक्ट. एंड गिवन दैट फ्रॉड क्लासिफिकेशन कैरीज बोथ सिविल एंड क्रिमिनल कॉन्सिक्वेंसेस, fairness demands more than just a written exchange. Now, these both are reasonable positions. So, how did the court rule? Here is the court's first and most important finding. The Supreme Court held that Rajesh Agrawal never actually held that borrowers have a right to a personal or oral hearing. The words reply and representation in that earlier judgment, the court clarified, mean a written reply, not an in-person hearing. Now, fraud classification is primarily an administrative process. It is based on documents. Mandating an oral hearing in every single case would be impractical and would cause serious delay. So the court's conclusion on this point is show cause notice plus written reply plus a reasoned order. This combination already satisfies the principle of natural justice and no personal hearing is required. Now, second part of the holding, and this is the part that actually protects borrowers, because court held that banks must furnish the audit report, including the forensic audit report, to the borrower if that report is being relied upon for the fraud classification, and digital copies are also valid compliance. Now, there is one narrow exception. Disclosure can be limited only for genuinely sensitive third-party material, and even then only with recorded reasons. It cannot be a blanket excuse to withhold the report. And finally, the court gave a clear 3-step direction for the specific cases. Banks must furnish the full report. The borrower then files a fresh written reply, and the bank must then pass a fresh reasoned order. So, to summarize both holdings together, no personal hearing is required, but full and meaningful access to the evidence is required.
and that is the balance the court has struck. So now we can connect the dots with Audi Alterum Partem. You can read this on your own. Now, the significance of this case, important for administrative law, banking law, regulatory practice, and also exam relevance. Now, this is one MCQ based question. In SBI versus Amit, the Supreme Court held that before classifying an account as fraud, banks must do what? So you have four options. Pause the screen, take your time, decide. It will tell whether what we did in the earlier part of the video was helpful or not. So the answer is B. Furnish the audit report and allow a written reply. No personal hearing required. Why? Because master direction 2024 mechanism is show cause notice, audit report disclosure, written reply, then recent order, and it satisfies natural justice without requiring an oral hearing. These are the key takeaways from this judgment. Thank you so much for watching this video, and you can subscribe for more law explainers. Follow along on Instagram for quick reel updates. Thank you so much for watching.